Students, see the question. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. यानी ऑर्डर वाइज ये 4 वर्टिसेस दी हुई है रोम्बस की और हमें उसका एरिया निकालना है. स्टूडेंट, एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपको पता हो, मैं रिकॉल करा देता हूँ. एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय 2. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले नेम साइड्स ऑफ रोम्बस दैट इज A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1. So this is a rhombus ABCD. यहाँ पर हम डायगोनल AC एंड BD को फाइंड आउट करते हैं क्योंकि उससे हमारा एरिया आएगा. नाउ द फर्स्ट डायगोनल D1 is AC equal to अंडर रूट -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर. स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने -1, 4 को x2 y2 लिया है एंड 3, 0 को x1 y1. So that's will equal to -1 -3 is -4 whole square plus 4 square, that is equal to 16 plus 16 equal to root 32, and root 32 can be written as 4 root 2. Now second diagonal D2 that is BD equal to under root 4 minus -2 whole square plus 5 minus -1 whole square. यहाँ पर स्टूडेंट मैंने 4, 5 को x2 y2 एंड -2, -1 को x1 y1 लिया है. सो 4 minus minus plus 2, that is 4 plus 2 is 6, 6 square. Now 5 minus minus plus 1, that is 5 plus 1 is also 6. So 6 square plus 6 square is 36 plus 36. That can be written as root 72 and 6 root 2, that will come out 6 root 2. Now the area of rhombus is half multiplied by diagonal D1 into diagonal D2, that is half multiplied by 4 root 2 into 6 root 2. Now root 2 into root 2 is 2, so 6 into 4 into 2 upon 2 is 2 से 2 cancel out, so 6 4s are 24, that is area of rhombus is 24 square units. So area is required, area is 24 square units. Question is done.